Good afternoon, everyone. Warm welcome to Regulatory Bodies YouTube channel by Testbook. My name is Madhav Sir. I welcome you all in the next session of Annual Report 2024-25. So this is part 3 of Annual Report 2024-25, and today we will be completing this entire report. And I'm pretty sure the previous two parts, you have watched those previous two parts in much detail, and you have gone through with you all the nitty-gritties which we have discussed in the previous two parts. And today we will be concluding our report with the third part of the report itself. Chalo. So in the previous session, if you remember, we have covered chapter 1 as well as chapter 2. I'll just give you a quick glimpse. If you remember, we have discussed chapter 1 was discussed, chapter 2 was discussed, even chapter 3 and chapter 4 were discussed. So today we will be moving ahead and we will be starting with the fifth chapter, that is related to the financial market. Then we'll talk about the financial stability, which means we are now discussing the RBI's roles and operations in the different sectors of the economy. So today's target is going to be which all sectors? So today's target is going to be the first one, that is financial market. Then we'll talk about the financial stability. After covering the financial stability, we will be moving ahead and then we will be talking about the other aspects of RBI operations. ठीक है जी? So let's get started from this point. Yes. So we are talking about the RBI's roles and operations in the forex market as well as in the financial market. So both of these things are going to be discussed. Let's get started. ठीक है? So overall, if I talk about the summary, what we are going to study, RBI has prioritized the developing and deepening of the financial market, streamlining the regulations as well as promoting the internationalization of Indian rupees. So it is basically done to ease of doing it is basically done to ease the doing of business in India, increase the transparency of operations in the country, as well as it results in orderly foreign exchange market conditions despite global volatility. Now, if I move on to the first point, that is the Financial Market Regulation Department. The Financial Market Regulation Department of RBI has come up with many initiatives. So the first one is it has enhanced aggregation and transparency of over-the-counter derivatives using legal entity identifier and unique transaction identifier. So this is very important. So it has been said by RBI that if you are coming up with the over-the-counter derivative, then in that particular case, the transparency and aggregation will be identified using the legal entity identifier as well as unique transaction identifier as the initiatives taken by RBI under the campaign which is known as Utkarsh 2.0. Second point is review the electronic trading platform authorization framework as well as develop a framework for the self-regulation organizations. So these self-regulatory organizations in the financial market, not only in financial market, but rather I would say all the segments of the economy which are regulated by RBI. RBI is promoting the setting up of self-regulatory organization in order to increase the efficiency of the operations of the concerned institutes in the given sector. So what are the major actions? First one, UTI concept paper prepared domestic implementation plan. So what is this? A UTI, that is unique transaction identifier. Concept is prepared on the paper, that means on the paper it is being prepared and very soon it will be implemented. Second point is domestic implementation is planned for UTI, then it will be extended for the foreign transactions as well. Third, next point is revised ETP framework, that is the revised trading platforms. Revised trading platform framework has been finalized and soon it will also be implemented by the RBI. So these are some of the current scenarios with respect to the demand, with respect to the targets of RBI. So these initiatives have already been taken, or this is the line of progress which has already been achieved with respect to the RBI targets. Moving on to the next point. What does the next point says? The next point talks about
Major actions, the next major action is SRO, that is Self-Regulatory Organization Framework, was already issued in August 2024 by RBI, under which the rules and regulations have been finalized, according to which the banks or according to which the self-regulatory organizations can be set up and they can seek license, they can seek permission from RBI. So related to that, all the past initiatives, all the past requirements have been finalized. Then gold price risk hedging via over-the-counter derivatives is permitted for residents at IFSC as well. IFSC means International Financial Service Center. So now you can go with, or you can go for over-the-counter derivatives at IFSC as well, which will help you to hedge the gold price risk, which will help you to fight against the change in or valuation change in or the change in price of the gold price of the gold. Authorized dealer category 1 banks are advised to prevent unauthorized forex trading. So basically the authorized dealer category 1 banks, they are advised that they should prevent the unauthorized forex trading. Foreign exchange of initial the exchange of initial margin mandated by non-centrally cleared over-the-counter derivatives has been finalized since May 2024. Then FAR, do you remember? Fully accessible route for the non-resident investment in government securities is recently adjusted. What adjustment has been done? Please pay attention. So with the view to putting in place a centralized repository of, non-residents, they are now permitted to invest in the specified categories of government securities, that is 5 years, 7 years, 10 years, 14 years and 30 years without any restrictions under fully accessible route implemented from 1st of April 2020. Now in consultation with the government, it was decided to exclude all the new government securities of 14 years and 30 years from the fully accessible route. तो पहले क्या था कि जो government securities हैं, all the government securities, they were allowed to be traded under the or to be invested by the foreign investors under the fully accessible route. If you remember, we have discussed this fully accessible route in much detail in our finance current affairs session. लेकिन उसमें अब एक कंडीशन दे दी. वो कंडीशन क्या कि सर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनकी मेच्योरिटी 14 years की है या 30 years की है, these two government securities will not be allowed to be traded or will not be allowed to be utilized under the fully accessible route. तो fully accessible route में 14 और 30 years की सिक्योरिटीज को हटा दिया गया. अभी भी जो एलिजिबल है 5, 7, 10, these are the 3 government securities which are allowed or which are eligible under the fully accessible route. This is something which you need to remember. अगला पॉइंट ध्यान से सुनना. When we talk about this NDSOM platform, access widened to SEBI registered non-bank brokers also. What is this NDSOM? Any idea, guys? Have you heard about this NDSOM? NDSOM की मैं अगर आपको यूज बताऊं तो यूज बड़ा सिंपल है सर. यूज क्या है? Whenever government securities are issued or whenever there is a news that government is going to issue the securities, so then in that particular case government comes up with government security bidding, and out of the bidding or once the bidding is done, then through a platform which we call it as negotiated dealing system, order matching platform is used to match the bid to the exact value. So it was introduced by RBI in 2005 and it is developed by Clearing Corporation of India. It is basically a part of larger negotiated dealing system which was originally a reporting and a dealing platform for RBI approved participants in the government security market. What was the objective? Sir, objective बड़ा simple था, to bring transparency as well as efficiency and liquidity in the government security market. So क्या features है? So first feature is anonymous trading. That means buyer and seller, their identities are not disclosed. Order matching means it work like a stock exchange. Price time priority के basis पे काम करता है. Instruments which are traded on this platform are central government securities, state development loans or state government securities, as well as the treasury bills. Who are the participants?
Sir, RBI registered entities such as banks, primary dealers, insurance companies, mutual fund companies, etc. These all are the participants. The retail investors, they can access the NSD OM indirectly via gilt account with bank or primary dealers. So settlement is basically done, I would say a guaranteed settlement is done through CCIL, because CCIL is involved in the entire operation, because this platform is basically developed by CCIL only. So the clearing will be done for sure by the Clearing Corporation of India. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात. तो NDS क्या है? So that is original for negotiated deals over the counter which are reported to RBI. Then we have NDS OM for order matching and anonymous trade. Then we have NDS OM web that is introduced later, which allows the retail investors to directly participate in the government securities through RBI retail direct scheme. So we call it as NDS OM web. तो एक तरफ आप प्राइस फिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रायोरिटी फिक्स हो रही है, और प्राइस और प्रायोरिटी के बेसिस पे मैचिंग हो रही है, एंड ऑन दैट बेसिस ऑफ मैचिंग द डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज बेसिकली डन. Good morning, Aki. Good morning. I hope my voice is clear. Everything is fine. Okay, chalo. Let's move on to the next point. The next point talks about the major actions. What are the major actions which have been taken? So, forward contract in government securities were introduced for long-term interest rate risk, management. So, for the interest rate risk management, forward contract in government securities have been issued. Second is reporting requirement for foreign exchange and gold derivatives has been strengthened via CCIL trade repository. इसका मतलब क्या है? जो CCIL की trade repository है, that will be utilizing the data which will be shared regarding the forex as well as gold derivatives, and this reporting requirement will strengthen the trade repository of the country. एजेंडा क्या है सर? एजेंडा 2025-26 का RBI का क्या एजेंडा है सर? RBI is going to implement UTI in India. What is this UTI? I just told you, unique transaction identifier in India. It will be implemented in 2025-26. Expand foreign exchange retail platform with Bharat Connect integration for individual USD and INR transaction. तो भैया आने वाले टाइम में फॉरेन एक्सचेंज के लिए रिटेल प्लेटफॉर्म को भी एक्सपैंड किया जाएगा, सो दैट वी कैन ट्रेड इन यूएसडी एज वेल एज INR if required. Next is responsibilities. If I talk about the next point comes up with the next department, that is financial market operation department. So the responsibilities of the financial market operation department is conduct liquidity management operations and ensure orderly foreign exchange market conditions via onshore as well as offshore operations. Key measures which have been taken in 2024-25, that is ASISO facility improved liquidity and CRR management, ECOBAIT 2.0 enhancement which allows auto upload government security market rates, multiple bid uploads for OMO as well as foreign exchange swap auction module under development. These are the features of ECOBAIT 2.0. Policy research on DFI या फिर REER trade balance and foreign exchange reserves is also conducted by the same department. What are the 2025-26 agendas? Review liquidity management framework, manage the USD INR volatility, and continue policy research to guide market operations. These are the targets which have been set. Fourth department, under the same we have foreign exchange department. What is the objective? Facilitate external trade and payments, promote orderly foreign exchange market development, and simplify rules, rationalize regulations, and increase INR use for cross-border transactions. So these are the objectives of this particular department. What actions have been taken by this department in 2024-25? First one is AP authorization framework under FEMA reviewed, external commercial borrowing framework rationalized, trade transaction guidelines simplified, risk-based supervisory framework for FFMC and non-bank authorized dealer category 2 has been introduced, and FEMA guarantees, mode of payment, and non-debt instrument regulations are under review. So these are the actions which have been taken. Along with these actions, we have action related to INR settlement,
that is INR internationalization, where this department is trying its level best to make the international trade settlements in INR, so that not only with the Indian trades but also the trade which is not conducted with India, or India is not the part of the trade, still the trade settlement is done in INR. So that kind of agenda, that kind of target is being fixed by this particular department. Compounding rules update to improve compliance and electronic payment options. Then we have liberalized remittance scheme. Then we have MTSS. Have you heard about this MTSS and RDA scheme? Any idea? Have you heard about this? Anyone? Give me the answer. अच्छा, क्वेश्चन एक और आ गया कि सर SNRR अकाउंट्स क्या है? मुझे तो लगा था कि ये आपको याद होगा, हमने पढ़ा है ये तो. SNR accounts. Any idea, guys? No idea? Chalo, I'll give you the answer. First of all, if I talk about liberalized remittance scheme, see, liberalized remittance scheme basically means RBI allows an Indian individual to, I would say, allow the Indian residents in India to remit money abroad for value $250,000 per financial year per individual. Above this, you have to seek permission from RBI, that is LRS. Then we have MTSS, which means Money Transfer Service Scheme. Money Transfer Service Scheme is basically a scheme which has been introduced by RBI under FEMA regulations, and the purpose is basically to enable quick inward personal remittance from overseas to individuals in India. Key features include nature only personal remittances allowed. Trade, investment, business payments are not allowed. Limit is 2,500 per remittance and maximum 30 remittances per calendar year per recipient are allowed. So it involves entities like Western Union, MoneyGram, as well as the Indian banks, NBFCs, Indian postal services, which are providing this facility. And disbursement, cash up to 50,000 or direct credit to bank account can be done. अगर आप 50,000 तक अपने जो पैसा रिमिट हुआ है इंडिया के बाहर से, तो इंडिया के बाहर से जो पैसा रिमिट हुआ 50,000 तक तो आपको कैश मिल जाएगा. उसके ज़्यादा अगर आपको चाहिए, दैट विल बी अकाउंट क्रेडिट ओनली, दैट वोंट बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कैश. थर्ड स्कीम इज RDA. RDA basically stands for Rupee Drawing Agreements या Rupee Drawing Arrangements. Rupee Drawing Arrangement as well as MTSS, they both are the same schemes. Scheme in the sense, the logic is same. It is also another route for inward remittances from abroad, mainly for family maintenance and personal needs. So key features are, it include remittances from overseas exchange houses. So tie-up has been done with the Indian banks, with the help of which remittances from the exchange houses can be done. Disbursement, it will be credited directly into the bank account only. Nature is only personal remittances allowed. Again, no trade, no investment remittances allowed. But there is no limit on inward remittance for personal use, unlike MTSS, where there is a limit of $2,500 per transaction. Cash payout is 50,000 permitted per transaction. Above that will be credited into the bank account. So, क्या difference है? MTSS small ticket size, maximum 30 per year, और इसमें मेनली जो पे आउट होगा दैट विल बी इन कैश. लेकिन RDA जो है दैट इज मेनली अकाउंट क्रेडिट्स, नो लिमिट ऑन नंबर एज वेल एज अमाउंट ऑफ transactions which can be done. So it is known as rupee drawing arrangements. Now the next point you asked me, SNRR, that stands for Special Non-Resident Rupee Account. So a person who was a resident, I would say a special non-resident rupee account is the rupee denominated account opened by a person resident outside India with an authorized dealer category 1 in India. So it is designed for specific business transactions permitted under the Foreign Exchange Management Act. Unlike NRI or NRO accounts, SNRR is mainly used for non-resident entities doing permissible business in India. So अगर मान लो John from US, he opens up an account in Indian bank, we call it as special non-resident rupee account, so that he can make the payment or he can receive the payments
from the transactions which he is doing in India with the Indians. So that is what we call it as SNRR. I hope it is clear. I hope it is clear, Sony. If it is clear, just give me yes, sir. Moving on to the next point. Cross-border equity swaps as well as reclassification of FPI to FDI will be done. Then FCY accounts for exporters and local currency settlement with Maldives has been enabled. What are the agendas? Rationalize FEM, which include guarantees, NDI, LRS, insurance deposit, branch office regulation, whatnot. Review the external commercial borrowing, AP authorization, and borrowing or lending rules for simplification. These are the agendas which have been set by this particular department for 2025-26. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये वाला पार्ट मैंने जानबूझ के ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया. आप इसे बस पढ़ लीजिएगा, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है. अगर मैं इसको बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा इट विल बी रियली वेरी टफ फॉर यू. इसलिए आई जस्ट गिव यू अ क्विक रीडिंग, और इस क्विक रीडिंग में भी ट्राई टू रिमेंबर स्कीम्स, क्योंकि आपको लग रहा होगा पता नहीं सर क्या कर रहे हैं और बता ही नहीं रहे. तो इंटेंशनली नहीं बता रहा था क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. ऊपर से पढ़ लेना और इसमें जो स्कीम्स है बस वो याद कर लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ज़्यादा टेक्निकल जाओगे फेल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है. Moving on to the next chapter. So the next chapter we have is chapter 6. So chapter 6 talks about financial stability. So it is basically regulation, supervision and financial stability. We all know that RBI is the regulator of banking sector. RBI is also responsible for the supervision of banking sector. RBI is also responsible for maintaining the financial stability as per the preamble of RBI. RBI के preamble में ये लिखा है that RBI is responsible for monetary and financial stability. अब क्वेश्चन ये है कि सर इस monetary and financial stability को अचीव करने के लिए RBI क्या क्या रूल्स, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है और रिसेंटली 2024-25 में क्या स्टेप्स फॉलो किए उसके बारे में बात करेंगे. सो प्लीज पे अटेंशन. What was the status of financial stability? The domestic financial system of India remained sound and resilient during 2024-25. तो 2024-25 में the domestic financial system of India has remained sound and resilient. Reserve Bank of India has focused on financial system fortification as well as responsible innovation related to technological disruptions, cyber risk and climate change. Third is aligning regulation with global best practices. तो वैसे तो ओवरऑल हमारी कंट्री स्टेबल थी फाइनेंशियल टर्म्स में, बट स्टिल RBI focused on certain parts. The first part on which RBI focused upon is written on the screen. How many of you have aware or how many of you have ever read this particular term which is written on the screen, or what you can inculcate by reading the first statement which says financial system fortification? Any idea, guys? What does it means? What does it means? Financial system fortification? No, no worries. I'll let you know. I'll explain you this point. So financial system fortification basically means strengthening the resilience, existence, self-sustainability of banks, NBFCs as well as payment systems. Under this financial system fortification, RBI ensure that the banks, the NBFCs, the financial institutes, they must have adequate capital, adequate liquidity, as well as they run on appropriate governance standards. It also focus on enhancing the supervisory framework to deal with the shocks. So these are the areas जिस पर RBI ने focus किया to make the financial institutes of the country more strong, more capable to survive the shocks and tough situations in the upcoming days to go. Second point is responsible innovation. So it is basically encouraging the adoption of fintech, digital lending, CBDC, artificial intelligence or machine learning, etc. So balancing innovation with safeguards against the technological disruptions, cyber risk and operational vulnerabilities, integrating climate risk consideration into the risk management framework. These are the
second focused area of RBI. The third focused area was RBI was aligning India's regulation with the global best practices. मतलब ये हुआ कि India is trying to harmonize its regulations with Basel norms, FATF standards, IOS CO principles and whatnot. In this context, India is adopting risk-based supervision, stress testing and international benchmarks which is done all over the world, so that कि अगर आप इंडिया के बारे में या इंडिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ें, उनके रिस्क को एनालाइज करें, you can compare it on the international level because you are following the same method, the same methodology, the same terminology as it is used on the global levels. Now, what were the key focus areas? So the key focus areas were, first one, risk management. Second focus area was regulatory compliance and enforcement. Third was consumer education and protection. So first is risk management. Second is regulatory compliance and enforcement. Third is consumer education and protection. So these are the key focus areas under the financial stability, regulatory and supervision function of RBI. If I talk about the departments which are involved under financial stability, so department is Department of Regulation, which is responsible for framing the rules and regulations. Fintech department, which is responsible for managing the digital currency, fintech innovation, SRO framework. Then we have Department of Supervision, which is responsible for supervision of the banks, on-site, off-site supervision. Cyber and IT risk is supervised. Fraud management is supervised. Prompt corrective action for urban cooperative banks. Supervisory data quality index. These all are the part of supervisory. These all are the part of Department of Supervision. Then we have the next department, Consumer Education and Protection Department, which works for customer awareness or consumer awareness as well as grievance redressal. Last is Financial Stability Department, so which is responsible for macro prudential surveillance, financial stability reports. Clear हुई ये बात? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देता है? सो दैट इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट. तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट से ही, तो सबसे पहला जो फंक्शन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट का वो क्या है? टू मॉनिटर मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. मॉनिटर करना कि वेदर ऑन द मैक्रो लेवल वी हैव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नॉट, एंड टू चेक दैट वेदर आवर financial system is resilient, capable to survive in near future. Next duty is act as a secretariat to FSDC subcommittee. I hope you know that the chairman of FSDC subcommittee is none other than RBI, and the secretariat of FSDC subcommittee is none other than the Financial Stability Department of RBI. It publishes the half-yearly financial stability report, and this financial stability report is published with macro stress test. That means the macro stress test is taken into consideration, keeping that in mind कि अगर ये stress इंडिया पे हुआ तो इंडिया के ऊपर क्या इसका impact होगा. Everything is shared in that particular report itself. And if you remember, we have discussed this report in much detail. अगर आपने ये report मुझसे नहीं पढ़ी, सर्च कर लेना आफ्टर माय सेशन. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, टेस्ट बुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, माधव अरोड़ा, कुछ भी लिखेंगे तो मिल जाएगी. अब एजेंडाज क्या थे 2024-25 के? सर, एजेंडाज विच हैव बीन फुलफिल्ड: इंप्लीमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ पीयर रिव्यू, डेवलप नॉन बैंकिंग स्टेबिलिटी मैप और इंडेक्स, एंड एनहांस सिंगल फैक्टर स्ट्रेस टेस्ट फॉर easy and more appropriate results of the financial institutions. अब इसके अगर हम कुछ implementation highlights की बात करें, it has revised the macro stress testing framework for scheduled commercial banks, where it has introduced VARX modeling for adverse macro financial scenarios. अब ये point important है, इसको समझना पड़ेगा. ये क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, exact story क्या है? Story ये है कि सर, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट की, तो मैंने कहा कि ये जो डिपार्टमेंट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्रेम द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तभी फ्रेम हो पाएगी जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक किया जाएगा. और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, व्हाट ऑल टेस्ट विल बी परफॉर्म, व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स विल बी टेकन, दैट हैज बीन बेसिकली डिस्कस्ड. सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन इन मच डिटेल. So first of all, if we talk about the financial
Stability Department, it performs certain tests on the banks, on the financial institutes, so that they can judge how much the financial sector of the country is stable. So the term which I have written on the screen, VARX, it stands for Vector Auto Regression with Exogenous Variables Modeling. No one is going to ask you कि आप क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं, बस आप ये समझो कि एक तरह का एक मॉडल है जिस मॉडल की मदद से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट बेसिकली स्टिमुलेट करता है एडवर्स मैक्रो फाइनेंशियल सिनेरियोस को। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या कहता है, पैनल रिग्रेशन फॉर स्लिपेज रेशियो इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, व्हाट इज इट। स्लिपेज रेशियो की बात करें तो इट इज एनपीए, कितनी स्टैंडर्ड एसेट्स एनपीए में कन्वर्ट हो रही है। सो स्लिपेज रेशियो हम अप्लाई करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट फॉर प्रोजेक्टिंग स्टैंडर्ड एसेट कन्वर्टिंग इनटू एनपीए, यानी कितना स्टैंडर्ड एसेट इज स्लिपिंग इनटू एनपीए कैटेगरी। इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस बिहेवियर is also witnessed under stress, that during stress how this interest income or expense is going to behave. Then the next point we have is that is revised macro stress testing framework for scheduled commercial banks, under which we have market risk incorporation into solvency stress test. So what is it? Market risk, which is now explicitly incorporated into the solvency stress test. तो ये जो स्ट्रेस हॉरिजन है, इट एक्सटेंड फ्रॉम 1 year to 1.5 to 2 years फॉर बेटर फॉरवर्ड लुकिंग असेसमेंट। लिक्विडिटी रिस्क का अगर मैं बात करूं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड और लिक्विडिटी रिस्क इंट्रोड्यूस्ड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बेस्ड लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट, जिसकी मदद से ये चेक किया जाता है कि व्हाट इज द लिक्विडिटी स्ट्रेस ऑन द बैंक्स। Then if I talk about the NBFCs, so it has also developed NBFC Stability Index, which captures the systematic risk from NBFC sector as well as complement banking sector stress analysis is also done. So remember these all initiatives which have been taken. Now, what are the agendas? What are the target for 2025-26? First is develop liquidity stress test for NBFCs. Develop liquidity stress test for NBFCs. Second is extend macro stress test to the urban cooperative banks. Third agenda is assess the climate transition risk on carbon intensive sectors and bank exposures. Fourth one is develop growth at risk model linking financial vulnerability to the potential economic growth outcomes. These are the agendas which are set. Moving on to the third point, that is regulation of financial intermediaries. So which is responsible or which department is responsible for the regulation of financial organizations? So the financial organizations, they are regulated by Department of Regulation, which regulates commercial banks, cooperative banks, NBFCs, credit information companies, all India financial institutes. It aligns regulation with domestic needs as well as international best practices. What were the targets for 2025? Valuation guidelines, web aggregation, project finance prudential norms as well as interest rate on advances. NBFC board committee, management charges in NBFC, overseas investment by NBFC, asset reconstruction companies, standalone primary dealers and connected lending were the targets for 2025. Now what were the implementations? So property valuation has been implemented under the review for standardization process. Digital lending guidelines have been issued by RBI. Project financing guidelines have been issued by RBI. Interest rate framework consultation is going on. Board committee and management changes draft guidelines are under review. ARC, that is asset reconstruction company, and SPD. What is this SPD, guys? ARC तो आपने बहुत बार पढ़ा, I know that. But what is this SPD? ARC stands for Asset Reconstruction Company, but SPD stands for what? Sir, it stands for Standalone Primary Dealers. So ARCs and Standalone Primary Dealer implementation is ongoing. Connected Lending Framework in preparation. So don't worry, आपको लग रहा होगा ये क्या है? इनमें से जो Master Direction, Circulars, Notification, Press Release,
आ चुके हैं वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, अभी आपको शायद याद ना भी आ रहे हो, इट्स ओके। और जो ड्राफ्ट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब की टेकअवेज की बात करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोकस, इट एम्फेसाइजेस ऑन मैक्रो prudential surveillance, stress testing, and climate risk. Digital and fintech regulation, that is CBDC pilots, central bank digital currency pilot, self-regulatory organization recognition, and digital lending transparency are the areas under digital and fintech regulations. Harmonization and simplification under harmonization and simplification under the regulation of property valuation, interest rate, connected lending and overseas investment. इसके लिए सभी regulated entities के लिए एक standard format RBI has given up. Then consumer protection, for consumer protection, ensuring borrower friendly digital lending and risk disclosure. And finally, forward looking initiative for 2025, stress testing for NBFCs and urban cooperative banks, climate risk evaluation, and unified lending frameworks will be implemented in 2025-26. अब 2024-25 में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई ने पास किए? ऑब्वियसली एज यू नो, फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जनवरी 2025 के बाद की जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, तो आई एम ओनली एंड ओनली हाईलाइटिंग either most important regulations of the last financial year or the most important master directions of the last financial year, or I will be majorly focusing on the regulations, rules or master directions, circulars which have been given after January 2025. तो एक बहुत important regulation आई थी, that was digital lending application. So I hope you know that RBI has given the digital lending, RBI has given the master direction or regulation for digital lending, in which RBI has come up with a statement, the digital lending app directory. What is this? Rise in illegal lending apps, falsy claiming association with the regulated entities. Action is public directory of verified digital lending apps via centralized information management system. So it says that कि इंडिया में जितनी भी digital lending apps हैं, they should register themselves and there will be a digital lending application directory, और इस directory की मदद से it will be very easy to identify not only for the regulated entities but for the customers as well, to identify which is a genuine regulatory, which is a genuine digital lending application performing in the country. So regulated entities, they have to submit their data by 15th of June 2025. Those who have failed to submit their data, they were not allowed to continue their operation as a digital lending application. अगला जो मेजर चेंज हुआ, दैट इज रिलेटेड टू की फैक्ट स्टेटमेंट. तो की फैक्ट स्टेटमेंट ऑन लोन्स, अगर आपको याद हो, अब क्या है, जब भी कभी आप लोन लेने जाएंगे, बैंक विल प्रोवाइड यू अ की फैक्ट स्टेटमेंट, और ये जो की फैक्ट स्टेटमेंट, इट विल कंप्राइज ऑफ ऑल द लोन nitty-gritties, all the loan details, all the loan detail aspects, and even this key financial statement will be given in a language which is understood by the borrower. So circular was given back in April 2024. It is applied to all the retail as well as MSME loan, which provides borrower with simple and clear loan information including all in cost. तो आज की डेट में जितने भी रिटेल लोन्स हैं या MSME लोन्स हैं, बैंक इज having this, I would say, duty, or it's a mandatory condition on the bank to provide KFS. The next change which has been done is done with respect to the gold monetization scheme. So in case of gold monetization scheme, medium and long term government deposits have been discontinued since 26th of March 2025, but still short term bank deposit is still continuing under the gold monetization scheme. So what is gold monetization scheme? So जैसे आप पैसे को डिपॉजिट करते हैं, वैसे you are allowed to deposit your gold with the bank and bank will pay you the interest on your gold deposit. पहले long term, short term, medium term, तीन aspects में it was allowed, but now it is allowed only and only in one aspect, कि अगर आप आज एक गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट बैंक में ओपन करते हैं, दैट विल बी अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म ओनली. इट वोंट बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग और मीडियम टर्म एज पर द चेंजेस व्हिच हैव बीन डन रिसेंटली, एज पर द चेंजेस व्हिच हैज बीन डन रिसेंटली. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट. नेक्स्ट, फोर्थ जो पॉइंट है रिलेटेड टू मेजर डेवलपमेंट्स, दैट इज क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस.
So what is the initiative? So capacity building workshops have been organized on climate risk for regulated entity middle management, hosted NGFS meetings and national seminars on climate finance so that everyone in the banks should be aware that what is the climate risk, how this climate risk is need to be included, how this climate risk is need to be included in your uh, bank loan risk calculations as well. It should be need to be included in the bank risk calculations as well. So this is the basic part. Second part which we have is that is RBCRIS, that is Reserve Bank Climate Risk Information System. So Reserve Bank Climate Risk Information System was launched in October 2024, public data portal, and it is a standardized data set for the regulated entity. So this is Climate Risk Information System, which is a public data portal, and it will provide, undoubtedly, it will provide the information to the regulated entities as well to understand what is the scenario of climate risk in the current year or in the current future or in the upcoming future. Next regulation or next update is scheduled commercial bank exposure to NBFCs. So initial action was there was increase in risk weight by 25% for certain consumer credit as well as NBFC exposure, but in February it has been revised and it has been said that risk weighted restored based on external ratings. तो पहले जो 25% का रिस्क वेट इंक्रीज किया था, इट हैज नाउ बीन अगेन रिवाइज बैक कि भैया अब रिस्क बेस्ड रेटिंग्स पे ही क्या किया जाएगा, आपके रिस्क वैल्यू को डिफाइन किया जाएगा. नेक्स्ट वी हैव द गाइडलाइंस on the settlement of dues of the borrowers by ARCs. So revised OTS guidelines. What is this entire news? ये important है, इसके बारे में बात कर लेते हैं. Please pay attention guys. अगर हम बात करते हैं settlement of dues, and that too we are talking about the dues of ARCs, that is asset reconstruction company. ये क्या है? देखो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो कंपनी है जो बैंक के एनपीएस को खरीदती है और बैंक के एनपीएस को खरीद कर फंड्स की रिकवरी करती है बाय दी आईबीसी एज वेल एज सारफेसी एक्ट. ठीक है, अब उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ टर्म्स डिफाइन की गई है. वो क्या? सर, आरबीआई ने इशू की गाइडलाइंस फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज और ऑब्जेक्टिव क्या था इन गाइडलाइंस का कि सर इंश्योर करना ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड फेयर सेटलमेंट ऑफ बोरोवर ड्यूज अंडर दी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम. तो ये जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, इट इज परमिटेड ओनली आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल अदर रिकवरी ऑप्शंस. तो पहला पॉइंट ये है कि सर अगर एक एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इट वांट्स टू गो फॉर वन टाइम सेटलमेंट, इट कैन बी डन ओनली इफ एआरसी हैज एक्सप्लोर्ड ऑल द अदर मेजर्स ऑफ रिकवरी. अगर उनसे रिकवरी नहीं हो पाई तो हार कर आप वापस आए हो ओटीएस पे तो ठीक है. अगर आपने पहली ऑप्शन ही अपनी ओटीएस रखी, दैट इज नॉट अलाउड एज पर द लेटेस्ट अनाउंसमेंट डन बाय आरबीआई. उसमें भी आरबीआई ने क्या कहा, जो लार्जर अकाउंट्स है, लार्ज अकाउंट्स का मतलब ग्रेटर देन 1 करोड़, ग्रेटर देन 1 करोड़ फ्रॉड या विलफुल डिफॉल्टर केसेस जो है, या तो आपका जो लार्ज अकाउंट है 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू का, दूसरा पॉइंट इसमें है, या फिर एक फ्रॉड अकाउंट है या फिर एक विलफुल डिफॉल्टर अकाउंट है. उस केस में रिव्यू विल बी डन बाय इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी और जो फाइनल डिसीजन है दैट रिक्वायर्स बोर्ड अप्रूवल विद पार्टिसिपेशन ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. लेकिन अगर स्मॉलर अकाउंट्स हैं अप टू 1 करोड़ तो सेटलमेंट टू बी गवर्न्ड बाय द बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी ऑफ एआरसी. तो अगर आपका 1 करोड़ से कम है तो उस केस में बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी पे सेटलमेंट होगी. लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा तो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी है, रिव्यू करेगी, फिर फाइनल डिसीजन बोर्ड लेगा एंड उस बोर्ड की मीटिंग में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है. तो इससे फायदा क्या हुआ सर? इससे स्ट्रेंथन हो गई गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इन एआरसी. ये प्रिवेंट करेगा मिसयूज ऑफ वन टाइम सेटलमेंट इन लार्ज और सेंसिटिव केसेस. ये इनकरेज करेगा फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्मॉल borrower account and it will enhance confidence of banks, investors and regulations in the ARC led regulations. उसके बेसिस पे ये पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है जी. नेक्स्ट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग. आई होप इसके बारे में आपको याद होगा
क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, ये पूरी स्टोरी में क्या था, ये भी न्यूज़ हमने कवर की थी अगर आपको याद हो। एक्चुअली जो बैंक्स है, they are sharing their loan information with the RBI, and that credit information is shared on was shared on monthly basis। 30 दिन का डेटा कंपाइल किया जाता था, फिर शेयर किया जाता, लगभग 40 दिन लग जाते थे वो डेटा आरबीआई तक, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी तक पहुंचने में। लेकिन जब आरबीआई ने ये रियलाइज किया कि भैया ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप 40-40 दिन के गैप पे अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज अपना डेटा बना रही है तो दैट कुड नॉट बी एन एग्जैक्ट डेटा। फॉर एग्जांपल, आई हैव मिस्ड माय लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट मतलब जो मेरी पिछले महीने की इंस्टॉलमेंट थी इन एसबीआई मिस्ड, एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आईसीआईसीआई टू बोरो द लोन। आईसीआईसीआई विल चेक माय क्रेडिट इंफॉर्मेशन, विल चेक माय क्रेडिट स्कोर, इट विल स्टिल बी ओके, बिकॉज अभी जो लास्ट मंथ मेरी इंस्टॉलमेंट मिस हुई है उसकी इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन येट शेयर्ड, हैज नॉट येट बीन शेयर्ड विद द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो आरबीआई ने कहा भैया ऐसा काम नहीं चलेगा, नाउ यू हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन 15 डेज बेसिस। तो अगर आप 15 डेज बेसिस पे इस इंफॉर्मेशन को शेयर करोगे, इट विल बी मोर एक्यूरेट, इट विल बी मोर रिलायबल फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज टू टेक देयर डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन और विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट रिव्यू ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। आई गेस इस पे क्या ही बात करूं, पूरे 1.5 घंटे का क्लास लिया था इस पे तो मैंने। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की प्रूडेंशियल नॉर्म्स में कुछ रिविजन्स किए हैं, where RBI has rationalized the prudential norms for operational flexibility while maintaining regulatory objective. Small value loan upper limit has been increased from 0.2 to 0.4% of tier 1 capital, or from 1 crore to 3 crore rupees. I hope you remember that. Housing loan aggregate exposure limits has been rationalized. Real estate loan stricter limit has been introduced. Individual housing loan enhanced monetary ceiling for tier 1 and tier 4 urban cooperative banks, as well as the valuation glide path extended for 2 years till 2027-28. What is this SR valuation, guys? किसी को याद है that we have discussed these master directions and it was a 1 hour 30-minute session when we talked about this master direction. So this is security receipts valuation. So security receipt valuation के लिए glide path has been extended by 2 years till 2027-28. Is this point clear, guys? Any doubt till this point? क्लियर हो गया ना? सो सिक्योरिटी रिसीट्स इशूड बाय एआरसी, तो उसकी वैल्यूएशन के ऊपर भी एक इनिशिएटिव था, दैट इज गिवन। अब मैं पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट इज रिस्क weights on microfinance loans. Again, we have done this. Previous risk weights were 125% for customer credit, vehicle, gold loan, excluding housing and education. Revised is microfinance loan, consumer credit 100%, other microfinance loans under RRP will be 75%, and microfinance loans by RRBs or local area banks will be 100%. This revision has been done recently. Then we have fintech department initiatives. So in case of fintech department initiative, what are the initiatives done? Expanded central bank digital currency, launched unified lending interface, established self-regulatory organization, launched fintech repository and mtech repository, as well as conducted global hackathon Harbinger 2024, operate regulatory sandbox, 6th cohort underway. So जो आपके सैंडबॉक्स का 5 कोहर्ट तो अब तक हो गए हैं, 6th कोहर्ट जो है दैट इज अंडरवे, इट इज बीइंग क्रिएटेड वंस द 6th कोहर्ट इज अंडरवे, बट टिल 5 वी हैव रिसीव्ड द रिजल्ट्स एज वेल। इम्प्लीमेंटेशंस की बात करें तो CBDC हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट, central bank digital currency has been launched. Then we have approximately 88,000 beneficiaries have enjoyed this retail CBDC benefits. Cross-border CBDC pilot has been done where you are making the payment using the CBDC from one nation to another.
Then in case of regulatory sandbox, 4 thematic cohorts completed. 5th cohort neutral was ongoing when this report was presented, but yes, in May 2025 this has also completed. ऑन एप्लीकेशन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द क्लोज थीम्स, तो जो आपके क्लोज थीम्स हैं आज भी अगर आप चाहें तो उनके लिए ऑन टैप अप्लाई कर सकते हैं, एंड इफ आरबीआई फील दैट आरबीआई विल एक्सेप्ट इट एंड रन इट ऑन द regulatory sandbox. अब what are the major initiatives which have been taken under AI, digital infrastructure और fintech? सबसे पहला major initiative है that is framework for responsible and ethical enablement of AI. Objective क्या था कि सर एक ethical और responsible adoption हो AI का in the financial sector. External committee was constituted in December 2024 and now this committee has given its report. Obviously इस एनुअल रिपोर्ट के बाद इस कमेटी ने रिपोर्ट दी, बट इस कमेटी की अब रिपोर्ट आ चुकी है. सेकेंड इज ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर was organized in Bengaluru. Fintech engagements interaction in 2024-25 is 486 total. 22 structured group sessions were taken on fintech engagements. In this fintech engagements, we have certain points. First one is Finquery. What is Finquery? So it is basically policy clarification and open inquiries in Mumbai. 10 sessions were conducted जहां पे आप आकर अपनी जो भी fintech related queries हैं वो resolve करवा सकते हैं. दूसरा initiative था FinTract, so rational city level interaction which was organized, and last is FinConnect. This is platform connecting regulatory sandbox and harbinger winner with banks, NBFCs as well as investors. तो ये FinConnect क्या करता है सर, जो आपके रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से सक्सेसफुली एग्जिट करते हैं या हार्बिंगर के जो विनर्स हैं वो डायरेक्टली बैंक्स के साथ, एनबीएफसीज के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो पाए, ताकि जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया उसे आप इंप्लीमेंट कर सकें. और उसके साथ साथ FinTract क्या है सर, इट इज बेसिकली अ रैशनल सिटी लेवल इंटरेक्शन वेयर यू कैन इंटरेक्ट रिलेटेड टू दी fintech industry, related to the fintech initiatives, fintech operations and whatnot. तो ये initiatives हैं under fintech और these are the initiatives under the AI, digital and infrastructure. अब बात आती है fraud की. अगर हम इंडिया में frauds की बात करें, सबसे ज्यादा जो frauds रिकॉर्ड किए गए हैं they have been recorded with private banks in terms of number of cases. लेकिन अगर आप value of fraud की बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो value of fraud है that has been reported with the public sector banks, और सबसे ज्यादा highest number of frauds has been recorded in digital payments and highest value of frauds has been recorded with loans. ये मैं लिख देता हूं ताकि आपके पास ये डेटा रहे. डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 99% पूछे जाने के चांसेस हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन फ्रॉड्स, highest number of cases of frauds have been recorded with private banks. Total highest value of frauds is recorded with the public banks. On the other side, highest number of frauds is done in the case of digital banking. Highest number of frauds is done in the case of digital banking, and the highest value of frauds is reported for loan category. ठीक है जी, लोन कैटेगरी में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रॉड्स रिपोर्ट हुए और नंबर ऑफ फ्रॉड हाईएस्ट रिपोर्ट हुए डिजिटल पेमेंट्स में. डिजिटल पेमेंट्स का मतलब कार्ड एंड इंटरनेट. और अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो रिपोर्ट हुए दैट इज फ्रॉम पेमेंट बैंक्स, और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रॉड्स जो रिपोर्ट हुए दैट इज फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. इंक्रीज इन फ्रॉड अमाउंट, अगर हम फ्रॉड अमाउंट की बात करें, फ्रॉड अमाउंट हैज बीन इंक्रीज्ड. 18,674 crore reclassified and reported afresh following Supreme Court judgment March 2023. उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉड एनालिसिस में 2025-26 में क्या क्या टारगेट्स रखे जाएंगे. अपडेट स्टैट्यूटरी एंड कॉन्करेंट ऑडिट इंस्ट्रक्शंस, कंडक्ट थीमेटिक साइबर रिस्क रिव्यूज, एनहांस साइबर रेजिलियंस, कंडक्ट क्रॉस सेक्टोरल साइबर क्राइसिस एंड एनहांस एनबीएफसी बेस लेयर सुपरविजन फ्रेमवर्क. तो ये एरियाज हैं जिन पे आरबीआई काम करेगा सो दैट जो फ्रॉड्स हैं उसे कम किया जाए फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. याद रखिएगा इसमें एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू
ombudsman. If we talk about the ombudsman scheme, so the term over here which is written on the screen is ORBIO. Are you aware of this ORBIO? What is it? सुना आपने इसके बारे में? It stands for what? No idea? चलो मैं आपको बता दूं ताकि ये कंफ्यूजन आपको दोबारा ना हो जो अभी हो रही है. दिस इज बेसिकली इसको आप ऐसा पढ़ सकते हैं, ठीक है. इसको ऐसा जब आप पढ़ोगे तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? सो दिस O इज offices of the RBI integrated ombudsman scheme. Offices of the RBI integrated ombudsman scheme. So during 2024-25, ये बड़ा important है, 2.96 lakh complaints were received at the offices of RBI integrated ombudsman scheme compared to 2.93 lakh complaints in the last financial year 2023-24. तो ये जो complaint का count है as per the report, ये आप याद रख लेना. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसके अलावा कुछ और याद रखने की इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर भी अगर आप रखना चाहो तो आप ये समझ लेना जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स मिली दैट वाज अगेंस्ट बैंक, और जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स रिसीव हुई दैट वाज रिलेटेड टू लोन्स एंड एडवांसेस. ठीक है ना. तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स वर अगेंस्ट बैंक्स एंड सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स वर रिलेटेड टू बैंक लोन्स एंड एडवांसेस, और सेकंड रैंक पे था डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स. On the second rank, we had digital banking products. Next, DICGC, we all know that this is the wholly owned subsidiary of RBI, and this wholly owned subsidiary of RBI is responsible for ensuring the public deposits with the bank, and in order to provide this insurance service, it charges premium on the banks. So there is a data related to DICGC. What is the objective? Protect depositors, preserve public confidence, and support financial stability. Coverages, it is mandatory for all the banks, commercial as well as cooperative banks, but it is not covering the public deposit with NBFCs, as well as it do not cover the public belongings in the bank lockers. It do not cover the public belongings in the bank lockers. So remember that 1982 insured banks, which include 139 commercial banks and 1843 cooperative banks. Current coverage is 5 lakh rupees per depositor per bank. अब एक बैंक में आपके चाहे एक अकाउंट है चाहे 50 अकाउंट है, पर बैंक में आपको जो इंश्योरेंस मिलेगा दैट विल बी 5 lakh rupees ओनली, रिगार्डलेस ऑफ योर डिपॉजिट, रिगार्डलेस ऑफ योर नंबर ऑफ अकाउंट्स. अब इसमें अगर हम बात करें अकाउंट्स की, तो सबसे पहली चीज कितने अकाउंट्स हैं जो कि फुली इंश्योर्ड है. तो जो फुली इंश्योर्ड अकाउंट्स हैं दैट इज 97.7%, which means 97.7% of total deposit accounts are holding deposits up to 5 lakh rupees. That is why we call them as fully insured. But if you talk about the insured deposit value, so that is only 42.6%. इसका मतलब ये हुआ कि जो अकाउंट्स इसमें फुली इंश्योर्ड नहीं है, अराउंड 3%, मोटा मोटा मान लें तो 3% अकाउंट में मोटा मोटा 58% डिपॉजिट है आपकी कंट्री का, एंड रेस्ट ऑफ द 42% ऑफ द टोटल डिपॉजिट इज इन द above given accounts. This is very important data, remember that. Deposit insurance fund. Deposit insurance fund means this is the fund of DICGC. अब ये समझो दिस इज DICGC पूंजी, ये DICGC के असेट है, और इस
असेट वैल्यू की अगर मैं कहूँ ये लिक्विड एसेट है, कैश फॉर्म में या फिर आप कहें कि हाईली लिक्विड असेट की फॉर्म में, हाईली लिक्विड असेट की फॉर्म में इसे मेंटेन किया जाता है, विच इज 2,28,933 करोड़ रुपीज, विच मीन्स कि अगर बैंक कल को फ्लॉप हुआ, बैंक अगर कल को इंसॉल्वेंट हुआ, तो डीआईसीजीसी के पास लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं टू पे दी इंश्योरेंस क्लेम्स। और इसके लिए व्हाट इज द प्रीमियम चार्ज बाय डीआईसीजीसी? सर डीआईसीजीसी चार्ज अ प्रीमियम एंड द प्रीमियम वैल्यू इज व्हाट सर? दैट इज 0.12%। और इस साल प्रीमियम से 26,000 करोड़ रुपए कमाए हैं डीआईसीजीसी ने। क्लेम्स कितने दिए सर? क्लेम इस साल दिए 476 करोड़ रुपीस के, और ये सारे के सारे क्लेम्स वर रिलेटेड टू 43 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनको लिक्विडेट किया गया या जिनका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है, जिनके ऑपरेशंस को आरबीआई ने कंक्लूड कर दिया, और उनके बिहाफ पर आरबीआई ने कहा कि यू वोंट बी एबल टू ऑपरेट एज अ बैंक। तो उनमें जो भी डिपॉजिट था पब्लिक का, दैट हैज बीन ऑब्वियसली पेड बाय डीआईसीजीसी। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो डीआईएफ है 2 लाख करोड़, ये आया कहां से? सर पहला तो प्रीमियम, प्रीमियम इज अ सोर्स ऑफ फंड्स। उसके अलावा ये जो डीआईएफ आपका ऑलरेडी पड़ा है, यू मस्ट हैव इन्वेस्टेड इट, तो उस पर आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी खरीदी तो उस पर आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा होगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू मस्ट अंडरस्टैंड, विच इज द सोर्स ऑफ डीआईएफ इज, और क्या सोर्स हो सकती है आप बताना जरा। एक तो मैंने आपको बता दिया प्रीमियम, दूसरा मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट, तीसरा पता क्या? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब जब मान लो एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया और वो लिक्विडेशन में चला गया, तो उस केस में डीआईसीजीसी विल पे दी इंश्योरेंस क्लेम टू दी कस्टमर्स। लेकिन जब ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की असेट्स बिकेंगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, इंश्योरेंस कंपनी विल ऑल्सो गेट रिटर्न्स, इंश्योरेंस कंपनी विल ऑल्सो हैव अ क्लेम ऑन इट्स लिक्विडेशन। तो वो भी उसका क्या बन जाएगा? एक सोर्स ऑफ फंड बन जाएगा, विच विल एड ऑन इनटू द डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड, विच विल एड ऑन इनटू द डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड। ठीक है जी, क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया ये पॉइंट? इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर। If it is clear, just give me yes sir so that we can move ahead quickly everyone. If you have any doubt on this point, you may ask please, else I'll move ahead. अगला जो point है that is again important. अगला जो हमारा chapter है that is public debt management. We all know that RBI is responsible for managing the public debt. RBI is responsible for borrowing the funds on the behalf of the government, है ना? RBI is responsible to issue the government securities even on the behalf of स्टेट गवर्नमेंट। तो आरबीआई अपने वो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर रहा है या कैसे परफॉर्म किए हैं इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। आफ्टर डिस्कसिंग दैट वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई, दैट इज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, क्योंकि आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एज पर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। द नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, उस पर बात करेंगे। और लास्ट में जो हमारा चैप्टर 11 है, दैट इज गोइंग टू बी द स्टेटस ऑफ आरबीआई's बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ज्यादा बचा नहीं है, आई टेक हाफ एन आवर मोर टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। लेकिन अगर अभी तक यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। गिव मी फ्यू मिनट्स, नॉट फ्यू मिनट्स, गिव मी फ्यू सेकंड्स, आई विल बी राइट बैक। लेट मी गेट सम वाटर फॉर माई सेल्फ।
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे जो पहले 6 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ आरबीआई एंड पब्लिक डेट। तो अगर हम पब्लिक डेट में आरबीआई के रोल की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आरबीआई इज द debt manager because RBI manages the debt on the behalf of the central government as well as the state government. So RBI manages the borrowing needs of both central as well as state government. Objective क्या रहता है सर? Objective रहता है cost optimization, which means borrowing at a lowest possible cost. Risk mitigation, spread the borrowings over a long period to reduce liquidity risk. Market development, strengthen the government security market so that more and more investors they can participate smoothly in the government security market so that the government securities can raise the funds pretty easily. Now, what were the conditions, what were the results of government security market in 2024-25? Sir, the government security yield has decreased. That means the return on the new government bonds went down, meaning government borrowed at cheaper rates. Second point is weighted average coupon decreased. The average interest rate on the entire stock of debt also reduced slightly. So it means कि जो आप न्यू सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, द न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उन पे जो इंटरेस्ट रेट है दैट हैज डिक्रीज्ड, एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देन द ओवरऑल cost of the government securities has also reduced slightly, which is a good sign, which is a positive sign for government like India. Weighted average maturity increase. Now borrowing had a longer maturity period, example 30 to 50 years, reducing rollover risk. तो जो rollover risk है कि risk of repaying the funds at a very short time वो नहीं है, because the weighted average maturity of the government securities has increased. The next point which is important, issuance of sovereign green bonds. So issuance of sovereign green bonds will be continued. Special bonds for financing eco-friendly projects have been done. So they were introduced in this year also. Ultra long bonds of maturity 50 years, they have been issued, due to which the overall or due to which the weighted average maturity has increased for the government securities. अगला point बहुत important, ध्यान से देखना. Commercial banks, they have remained the largest holder of the government securities. Commercial bank, they have maintained the largest holder of the government securities. Around 36% of the total government securities is with the commercial banks, obviously because of SLR requirements. Then we have insurance companies on the second rank. Then on the third rank, we have provident funds. And after that, we have RBI. So this is the flow which you need to remember. गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डिंग का, तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डिंग किसके पास है? बैंक्स, देन इंश्योरेंस कंपनीज, देन पेंशन फंड कंपनीज, एंड देन वी हैव आरबीआई, एंड आरबीआई इज होल्डिंग अराउंड 8.1% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो ये समझो कि अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपए का लोन लिया हुआ है अभी तक, तो उसमें से 8 रुपए का लोन किसने दिया है? दैट इज आरबीआई. अब इसमें जो शेयर ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है दैट इज ओनली 1.9%. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का शेयर भी याद रखिएगा 1.9%, ये शेयर याद रखिएगा 34%, और ये शेयर याद रखिएगा 8%. तो ये जो डेटा मैंने आपको लिख के दे दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर बनाएगा. अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग कैसी रही इन 2024-25? टोटल जो बोरोइंग थी दैट वाज 24.7 lakh crore, which is 3% lower than the previous year. No need to remember the data. Most borrowings were through reissuances. That means issuing more of existing securities to improve liquidity. तो आपने क्या किया? जो already issued securities है, you have issued them again so that you can improve the liquidity. Switches 1.47 lakh crore worth of old securities have been swapped. So what is this? We call a scenario where government purchases the old security and issues the new security in order to increase the liability, in order to increase the time period for repayment. मतलब अगर मान लो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है which are going to mature in 2027, तो गवर्नमेंट ने उन सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को 2024 में खरीदा और उनके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दी जो 2035 में मैच्योर होगी. उनसे पैसा रेज किया और उसी पैसे से 2027 वालों को वापस कर दिया, जिससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है दैट इज नाउ बीइंग पेबल आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years, which was supposed to be paid in just next 2 to 3 years.
It was supposed to be paid in just next 2 to 3 years. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया, कोई दिक्कत? Okay, moving on to the next point. Buybacks 1.18 lakh crores of short-term bonds have been repurchased. So RBI government has also repurchased 1.18 lakh crores of short-term bonds as well. Central government से related अगर हम बात करें, range of maturity is 3 to 50 years. New benchmark introduced, एक नया benchmark introduce किया गया where government has introduced 15-year bonds instead of 14-year bonds. If I talk about the sovereign bonds, that is sovereign green bonds, that has been issued of value 21,697 crores. The number of primary dealers stood at 21, which include 14 banks as well as 7 standalone primary dealers. Why they are important? Because they are the primary participants of the government security market. Then we have the state government. In case of state government, they have borrowed around 79% of their fiscal deficit through government security, and rest 21% is raised from the other sources like national small saving funds and whatnot. So these government securities, state government securities, they have been issued for a range of 2 to 35 years. Weighted average cut off yield declined. बस यहाँ तक याद रखना कि जो आपका yield है state government securities पर भी decline हुआ है. Don't remember the data. States they have also used special drawing facility, ways and means advances as well as overdraft from RBI in order to manage or in order to fulfill their short-term needs. State maintain consolidated sinking fund and guarantee redemption fund with RBI for future repayment and guarantees. So future repayment के लिए consolidated sinking fund और guarantee redemption fund maintain करती है state governments with RBI. इस fund के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, if you allow me, because this is something which can be asked in the examination directly or maybe indirectly. तो अगर हम इस फंड के बारे में बात करें तो इस फंड से रिलेटेड क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है? सर, इस फंड से रिलेटेड इन दोनों ही फंड्स की एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन दोनों फंड्स की. So what does basically means? Please pay attention. Consolidated sinking fund is a fund which is created by state government to gradually set aside resources to repay outstanding debt. So it basically ensures fiscal discipline and it reduces the risk of default by spreading out repayment obligations over the time. So what are the features? Sir, it is managed by RBI, as I already discussed. Guarantee redemption fund क्या है? So it is created to meet liabilities arising from guarantees issued by state government. तो जो guarantees issue की है state government ने, उससे जो liability हो सकती है, उसके लिए जो funds स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है. कल को अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपनी गारंटी पूरी करनी होगी, जिसको गारंटी दी थी उसने लोन नहीं दिया, अब स्टेट गवर्नमेंट को देना, तो इस फंड से स्टेट गवर्नमेंट वो गारंटी पूरी कर सकती है. ठीक है जी. अगला पॉइंट आता है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स. दे हैव बीन ऑपरेशनल नाउ. रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च्ड विद यूपीआई ब्लॉक एंड डेबिट facility for easier payment for the retail investors like you and me. Foreign central bank scheme where RBI is investing in the government securities on the behalf of the foreign central banks and institution. It has invested around 730 crores in 2024-25. Primary dealers, as I said, 21 banks and standalone underwriter auctions. Their success ratio was 65% in 2024-25. अब 2025-26 का क्या टारगेट रखा है? एक्सपैंड करना रिटेल डायरेक्ट पोर्टल को, extend API system for seamless transfer, and then continue borrowing in an orderly manner aligned with fiscal deficit targets as well as market stability. ठीक है जी. Moving on to the 8th chapter, that is currency management. If I talk about the currency management, इस chapter में कुछ खास है नहीं. I'll not even discuss this. मैंने इसके notes आपको दे दिए, आप पढ़ लीजिएगा. That is more than sufficient. Basic चीजें हैं, read कीजिएगा. Nothing to discuss. वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि यहां से कोई क्वेश्चन पूछा भी जाएगा. ठीक है जी. अगला पॉइंट, अगला जो आपका चैप्टर है, दैट इज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इफ वी टॉक अबाउट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, it is full of data which says transaction volume of digital payments in India has increased by 34%, value has increased by 17.3%, digital transactions dominated retail payments, 99.9% of non-cash payments
Retail payments are 99.9% non-cash payments. UPI grew faster, and it has grown fastest in volume 41.7%, value 30.3%. NEFT RTGS transactions, they have also witnessed a growth surprisingly. Payment Infrastructure Development Fund helped in expanding the point of sale terminals as well as UPI QR code, especially in the smaller towns. New payment aggregators, prepaid payment instruments, white label ATM operators were authorized by RBI to operate. Fraud prevention के लिए Central Payment Fraud Information Registry extended to more banks for reporting frauds. Alternate authentication method using biometric, digital token or behavior analysis has been explored. RTGS NEFT now include pay name verification. यहाँ से ये question important है, जो question आपके examination में आ सकता है. Financial inclusion measures की मैं बात करूँ तो digital payment accessibility for persons with disability has been improved. Then delegated payment via UPI allows a secondary user to make payments from someone else account as well. तो ये क्या पहला पॉइंट, पहली तो ये कि सर जो डिजिटल पेमेंट है ना, हम उसे एक्सेसिबल बना रहे हैं फॉर द पर्संस विद डिसेबिलिटी. दूसरा है जो डेलीगेटेड पेमेंट्स है, इट मींस दैट यू कैन अलाउ सम सेकेंडरी यूजर टू मेक पेमेंट from your account. That means you have delegated someone, you have given the delegation to someone to make payment from your account, from your account on your behalf. ठीक है जी. अगला पॉइंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स, लिंकिंग ऑफ PPIs, that is prepaid payment instruments, with UPI. This is again a very important aspect, very important initiative which has been taken. Auto replenishment of UPI Lite, FASTag and NCMC wallets. UPI enabled cash deposit machines introduced. Then UPI transaction limit has increased for user and tax payment, जो हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, 5 लाख 2 लाख कैश क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के लिए, गोल्ड परचेज, ज्वेलरी परचेज के लिए एंड अदर ट्रांजेक्शंस के लिए पेमेंट हैज बीन रिवाइज्ड. UPI and RuPay cards accepted in multiple countries. We have studied about Singapore. अभी रिसेंटली हमने किस कंट्री के बारे में पढ़ा था? UPI, we have talked about Singapore as well as UAE. ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया ने टाई अप किया. Now you can directly transfer the funds from Singapore to India and India to Singapore using UPI. Public awareness, 419 electronic banking awareness programs, that is e-bath, conducted to educate the users on safe digital payments. Then what are the IT related initiatives? Very important. Pravah, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, क्यों इंट्रोड्यूस किया ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. चिराग, जनरेटिव AI टूल फॉर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन सपोर्ट in RBI operations. This has been introduced. Then we also talked about Sarthi 2.0, क्योंकि आपको याद होगा RBI has been awarded for these two initiatives. Upgraded electronic document management system for better workflow. Then we have Infinite 3.0, modernized secure communication network for banks with SD-WAN technology for improved performance, security and bandwidth. We call it as Infinite, that is India Financial Network. eKuber, next generation core banking solution for RBI. Global SFMS hub messaging platform for cross-border payments in local currencies, enabling direct connections with the other countries. Cloud for financial sector, that will secure cost-effective cloud services to modernize technology infrastructure and support banks, have been the initiatives which has been taken under IT sector. Cyber security के केस में बात करें तो cyber security awareness drive 2.0 and red teaming exercise conducted. Enterprise computing and cyber security training institute is under construction for advanced training. Target क्या है 2025-26 के? Conduct करेंगे surveys on the usage of pattern of digital payments, develop digital payment intelligence platform, payment vision 2028 का roadmap set होगा, identify and reduce frictions in cross-border payments, and continue developing of eKuber 3.0, alternate payment system, AI governance policies, as well as secure bank.in and fin.in domains, which has been implemented already
इंप्लीमेंट हो चुका है आप, क्योंकि आज हम 2025-26 में बैठे हैं, लेकिन जब ये रिपोर्ट आई थी तब 2025-26 का ये एजेंडा था। लेकिन अब बैंक.in और fin.in को इंप्लीमेंट कर दिया है। बैंक्स डोमेन नेम विल बी बैंक.in एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डोमेन नेम विल बी fin.in। ठीक है जी। उसके बाद आखिरी जो आपका चैप्टर है दैट इज कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, रिसर्च एंड स्टैट्स। इसमें कोई दम नहीं है, सिर्फ पढ़ लीजिएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको समरी बना के दे दी है ताकि आपके पास एक आइडिया हो क्या चल रहा है इन द 10th चैप्टर। यू जस्ट रीड इट। 11th चैप्टर तो आपके लिए है ही नहीं, दैट इज गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। ये आरबीआई के इंटरनल ऑपरेशन से रिलेटेड है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। लास्ट विच इज इंपॉर्टेंट दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज बैलेंस शीट। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनने के पूरे चांसेस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बैलेंस शीट है, इट हैज इंक्रीज बाय 8.20% ऑन ईयर बेसिस। इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 70,47,703 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया, 76,25,421 करोड़। तो इंक्रीज हुआ है लगभग 5,77,000 करोड़ का, विच इज 8.20%। रीजंस क्या है ग्रोथ की? गोल्ड वैल्यूएशन, गोल्ड के प्राइस बढ़े, उसकी वजह से आपकी एसेट वैल्यू बढ़ गई। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। रीजन फॉर ग्रोथ ऑन लाइबिलिटी, क्योंकि ये जो है ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का मतलब एसेट और लाइबिलिटी दे बोथ आर इक्वल। जितनी एसेट है उतनी ही लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्लूड्स द इक्विटी, आई नो दैट, इसको आप ऐसा कर लो। अब इसमें लाइबिलिटी बढ़ने के कारण क्या है सर, नोट्स जो ज्यादा इशू किए उससे लाइबिलिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आप नोट पे लिखते हैं हम धारक को 100 रुपए देने का वादा करते हैं, वादा किया तो वो आपकी लाइबिलिटी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट्स मतलब वो अकाउंट जिसमें आप रीवैल्यूएशन टर्म लिखते हैं, विच इज नॉट अ रियल अकाउंट। आपने रीवैल्यूएशन के टर्म्स में उस अकाउंट का बैलेंस तो बढ़ा दिया, बट एग्जैक्टली उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। एग्जैक्टली देयर इज नो फंड इनफ्लो with the organization, so that is a liability, and other liabilities has also increased. अगर हम asset composition की बात करें, domestic asset है 25.73%, foreign currency, gold, loan advances to the financial institutions abroad is 74.27%. This is a point to note down कि RBI की जो asset है उसमें मोटा 75% asset या तो फॉरेन करेंसी है, या 75% एसेट में फॉरेन करेंसी, गोल्ड, या फिर जो लोन दिए, एडवांसेस दिए आरबीआई ने टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया। ठीक है। और उसमें अगर हम बात करें डोमेस्टिक एसेट्स कितनी है, 25%, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। इफ यू कैन सी इन कंपैरिजन टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, दीज एसेट्स हैव इंक्रीज, एंड दिस इज आई वुड से दी it's not a flow data, it's a static data। तो ये डे के लिए प्रेजेंट किया जाता है। ऑन 31st of March this was the scenario, 31st of March 2024 this was the scenario। इनकम की बात करें, इनकम इंक्रीज बाय 22.77%, एक्सपेंडिचर ओनली बाय 7.6%, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ओवरऑल सरप्लस वाज 2,68,000 करोड़, प्रीवियस ईयर इट वाज 2,10,000 करोड़। तो इस साल सरप्लस जो बढ़ा दैट इज 27% which has been transferred to the government। Contingency fund transfer is 44,000 crores। Asset development fund, no provisions has been made in the previous financial year। Surplus transferred to central government as per RBI tradition। Part of net income is transferred after allocation of contingency fund as well as asset development fund। तो पिछले साल asset development fund कुछ रखा नहीं। contingency fund याद है, मैंने आपको इस पे पूरी की पूरी एक कहानी सुनाई थी। कंटिजेंसी फंड आरबीआई कैसे कैलकुलेट करता है, 4.5, 5.5, उसे अब इस बार इंक्रीज कर दिया। कंटिजेंसी फंड में क्या क्या चीज़ों को आरबीआई ध्यान में रख के अपने कंटिजेंसी फंड कैलकुलेट करता है, और उनको कैलकुलेट करने के बाद मेंटेन करता है, और बाकी बचे हुए पैसे को गवर्नमेंट के पास सरप्लस फॉर्म में ट्रांसफर करता है। सो अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें, बैलेंस शीट एक्सपेंशन हुआ है, इनकम ग्रोथ हुआ है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गोल्ड विद आरबीआई, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स दे हैव वेरीफाइड द स्टेटमेंट ऑफ आरबीआई। तो ये आपका डेटा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दिस इज द असेट वैल्यू, दिस इज द लाइबिलिटी वैल्यू। ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर।
इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। अगला अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे, P&L स्टेटमेंट में ये आ गई इनकम RBI की, जिसमें इंटरेस्ट इनकम सबसे ज़्यादा, या इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट 50% है, 50% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 60%, और बाकी है अदर सोर्स ऑफ इनकम। उसमें जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ अराउंड 69,000 करोड़, जो अवेलेबल बैलेंस है दैट इज़ 2,68,000 करोड़। इस एक्सपेंडिचर में भी 69,000 करोड़ में भी सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ रिजर्व्स, प्रोविजनिंग, जो आपने प्रोविजनिंग की है उसी में आपका मेजॉरिटी पैसा गया, वरना तो आपका कोई खर्चा है ही नहीं अगर आप इस प्रोविजनिंग को हटा दें। और उसके अलावा अगर मैं देखूं, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स पे अच्छा खासा खर्चा हुआ है, एजेंसी चार्जेस या एम्प्लॉय कॉस्ट, ये कुछ बड़े बड़े खर्चे हैं RBI के, लेकिन सबसे ज़्यादा 80% से भी ज़्यादा जो खर्चा है दैट इज़, और अराउंड 80% जो खर्चा है दैट इज़ ऑन द प्रोविजनिंग। तो इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो जो अमाउंट बची दैट इज़ 2,68,000 विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई? So this is all about your annual report. Today at 7 PM I will be connecting with you all again, जहाँ में हम अपनी जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे. So don't miss that session. That is really very important. Good luck. God bless you all. Bye bye. Take care. See you soon. Bye.